मैंने क्या नहीं करा। हाँ तो क्या है, अभी तो नीता मैम का शेड्यूल देखो पहले, शेड्यूल में जो फ्री टाइम है उसमें आप आके बात करोगे, है ना। आप बोलना करें नीता मैम की तो क्लासेस है, तो प्लीज टेक करिए। See, now to start the today's session, we already discussed the data structure and control structure, then function and file handling and packages. So I'll just request you, like if you have any doubt in these topics, then you please ask me or share me. So we'll start with the doubt session. Otherwise, I'll take a fresh topic that is for today's. So do we aware of like what is function and what are the advantages of file handling? File handling means we are just creating a file and just moving to that particular point first and then start like what is file handling. And repeat my sentence again. If we have any doubt in any of these topics, then please unmute up yourself and ask me. These are some specific questions which is having like loops, uh, conditions, and there they have to be define a function. So we already know what a function like unmodular approach is converted into the modular one. We are just giving a proper name, and within that name we are storing our whole program. It means the reusability, the customization of our code is there. So the thing is we just create a function, give some specific value and call of the function. Moreover, in all of the other languages, like it's a procedural language, it's a oops based language, that is a little bit tough because we have to be follow some kinds of procedure, the approach like top to bottom or bottom to top. But still here we are declaring the function with a specific name with the def keyword, and then creation of the function as well as calling. So they give a lot of example in our book. See, it's a required argument function using default argument, keyword argument, or arbitrary argument. So the required argument, this is the example. Let's say we create a function that is calculator, that is for the declaration a and b are known as an parameter. Colon, it means it is known as a curly braces open and curly braces closing. So print the value of a plus b, so they are the operations, right? If we are using two particular operators at the same moment, then it might be possible we are putting the bracket precedences here. So bracket values are solved first and later on the value is concatenated and printed over here. So they pass a value calculator में 5 comma 2. So 5 is for A and 2 is for B, right? So A and B known as a
parameter or known as an argument, and that value is storing there. On the basis of that value we get our result like a 7, it's a 3, it's a 10 and 2.5. So this is an example of your passing argument. And what are known as a default argument? So we just declare our def simple interest. Now in here we are just aware of like one particular thing, that is a different word. So different word means we are creating two particular things here. We are just creating two particular things here, like see, simple is the another one, interest is the another word. So we can join two different words at the same time. So on the basis of underscore, we are easily join or concat these two things simultaneously. So simple interest is known as a method name, and P T it's usually says time and R says of rate of interest जो भी आपने देना है. ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पी आर टी मेथड होता है, डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हो. Simple interest is I'm calling the value. On the basis of this particular method, we just get a specific result. Get the result after maintaining this or after this requirement is fulfilling the record. So simple interest value is here, and this one is what it's an rate of interest, and rate of interest ke baad it is known as a time. So on the basis of this we can easily get the default argument. Some of the key argument are what? Key argument is, let's say p multiply by pow. Pow is what? It's a argument. It's a default argument. It's a keyword. So the methods are known. The predefined methods are known here. So some of the like arbitrary argument example is also mentioned in our block. So running and returning from a function. So def keyword, function name, and then so many examples they are maintaining and they are performing something here. See the map function, it's a filter, and then we can say it's a mapping. See, this is the concept of file handling. What is file handling? Exactly, if we make a file, it's a normal or it's a text file, and with the basis of some particular operation, we can some time like storing the value, we can just like extracting some particular value, right? So they are known as a file operation. So files are having two types. We are asking it is supporting by our Python language. One is like binary file format and another one is text. So what is known as a binary? It means like it is a combination of zeros and one. And what is known as a text? A sequence or the organized sequence of characters are known as a text file. So we can easily open, we can easily read, write, and close the file, right? So they are known as a file handling concept. It means open is a built-in method or a predefined method. So we can easily, within the parenthesis, we just give a particular file name, comma, mode of the operation. So file name dot ext means extension dena hai. So see here, R stand for reading only. We cannot amend, we cannot update anything. W is for the writing process. A is means append karna hai. In the existing file, we can open and add some more content, more sequences, more lines. R plus means read and write as well. W plus means write and the file doesn't exist, overwrite करना है. तो ये जो सारे format हैं, then A plus X, so they all are mode of our file and file execution in Python. So reading के लिए read is the method. What is the syntax? Like file dot read.
File dot read means n means we are just passing any kind of character. Read line means a complete line. Read lines means more than one line. Write again to writing something, tell, seek, goal peak, start. So they all are known as a function. The major thing is when we open a method, when we open a file operation, definitely we can close it. If we are not closing the file, definitely we are keeping ourselves in the loop. So it E of file mane end of file and BOF माने is the beginner of file. So begin हुआ है तो ending उसका must है should है. अच्छा दो के लिए आपको रिजल्ट चाहिए वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लें क्या ठीक जी 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 मैम जी बिल्कुल जी ओके जी थैंक यू please read this please read this please read this. See, while we create a file, so creating of the file means file equal open. So file is storing in a particular location. First of all, we just give a command to open the existing file. So second.txt is our file name. W stand for we want to write some more content. So file.write. Write is the method. Through this method, we can write some content into our existing file. So first line is added, second and third. These are three particular lines. We can add one particular file and then we close our file. So if the content is successfully updated, after updation, the result is showing file created successfully. See the result. So reading, writing, append, and with the statement. So these are some particular function. Through that function, we can write, we can read, we can update. Even though os.remove to this chdr through this, we can already remove some content. So there are a lot of examples are showing in this block. Now I'll request you, this is block number 3 and we have any kind of doubt, please be open, please be share your doubt. So we'll discuss the doubt first. Then after we can move to our new block that is MCS 201 block number 4. In that block that they write here, it's advanced features in Python. So first of all, classes in Python, exception handling, Python advanced concept, and at the last one, the unit number 16, having data access using Python. So please, I'm giving you 2 to 5 minutes. Please be ready and share the points if you have any kind of the point in the related with the block number 1 or 2 or 3, right? Take 5 minutes and then think about and please share it. Ma'am, can we create HTML file
using the concept. Okay, Anjali. Ma'am, what is the difference between function argument? What is the question? Function argument and arbitrary argument. Okay, all right, Mihir. And I can just stop my sharing. I am giving you the answer. Give me a minute. देखो अंजलि, yes, of course, we create the web concept using our Python, but as the thing is going on, we haven't the concept of data visualization and as well as the web. So if that thing is not maintaining our course, not doing at this time, but later on we can we can use our Python concept using HTML, CSS, JS, and Bootstrap. We can implement it with the help of IDE. Or the second thing is with the help of the filter. You can create uh, the things, but that thing is not available at this time. Now, the second question is like, what is the difference between the function argument or the it's arbitrary argument? So, two particular things are there. First, we understand that what is function argument. So, we can easily define like arguments are what? Argument is user defined, right? So, defining a function and calling, then in that we can say it's known as an argument. Let's say we create a function and then we pass some value. On the basis of value, we are easily get that value. So it is known as a function argument. And what is the second one? That is the default. So आर्बिट्रेरी की अब मैं बात कर रही हूँ, डिफॉल्ट तो वही है जिस जो हम क्रिएट करेंगे और कॉल कर लेंगे. अब देखो यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है. सो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर व्हाट? So functions having a fixed number of arguments. So they we can define a function and then take we just create a variable and number of arguments we are creating, right? On the basis of that, we can easily call it. So these are two different things. Keyword भी argument हो सकता है. Arbitrary argument की when we are talking about like what is arguments, arbitrary argument. So the number of argument that will be passed into a function. So Python allow us to handle these kind of things, this kind of situation through that function call with an arbitrary number of argument. We generally put a asterisk symbol before the parameter to denote this kind of argument that is known as arbitrary argument. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू जब स्टोर कर देते हो, कॉपी करवा लेते हो, रख देते हो, देन इट इज नोन एज एन आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट. This is my words to you. Is the concept is clear? Mihir, Mihir, now you are aware of what is the difference between function argument and arbitrary argument. Okay, all right. Anjali, we can create HTML files using this concept. If you want, you can create your HTML file while using Python IO. But HTML is what? HTML file is for showing the result, right? Still, the one thing is we can create our HTML file. We can create as well as easily browse the thing. So optimality is what we can create a function. हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है. लेकिन उसके लिए जो टेक्निक होगी, उसके लिए जो प्रोसेस होगा,
थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंट हो जाएगा अंजलि। आप बिल्कुल बना सकते हो और आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आईओ में जैसे हम बात करते हैं सीएसवी की, टीएक्सटी की, इनको आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप बिल्कुल ही बना सकते हो, और आप बना भी सकते हो और फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप फाइल में क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? No, ma'am. मुझे एक मिनट दो, क्योंकि मेरे को भी 4 o'clock स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन आए हैं, मैं चाहूंगी कि मैं पहले आपको शेयर करूँ। मैं आपके लिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम और दीजिए। लाइक ऑफलाइन आई कैन चेक, देन डेफिनेटली। सी अंजलि, आपका एक क्वेश्चन है कि क्या फाइल हैंडलिंग के थ्रू ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसे ओपन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को देखते हुए मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और एट द ऑफ टाइम लाइक आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ फाइल। See here, I just give me 1 minute. We just want to show the output of this file, and then we'll move to our new concept. My screen is shared now. Anyone can unmute and then ask me. Are you able to see my screen? Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. Is this screen is visible? Say yes or no. Yes, ma'am, yes. Please unmute of yourself. Yes, ma'am, it's visible. Anyone can unmute. Am I audible, guys? Ma'am, you are audible, but I guess we All of are not you are audible hearing to my you. voice now. बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं है, क्या करूं? Ma'am, we are not audible to. No, you are not audible to me. I am not audible to you. मुझे मैं भी पता नहीं आपको सुनाई दे रही है कि नहीं। मुझे राइट। यस, यू वी कैन सी। एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? Yes, ma'am. मैं ऑडिबल हूँ। ओके, तो मैं से क्यों था? ओके, थैंक यू। पर मेरे को क्यों नहीं आवाज आ रही थी? यस यस यस, नाउ इट्स ओके। मैं तो डर ही गई थी, मैंने कहा आवाज पता नहीं क्या जा ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है। मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी। देखो अंजलि, आपके रिस्पॉन्स के लिए ना मैंने एक छोटा सा फाइल क्रिएट किया है। सी, द थिंग इज, a function is a normal variable, open is a method, I am creating a file, ये मैंने जस्ट अभी क्रिएट करी है। सो n डॉट एच टी एम एल आई एम क्रिएटिंग, लेट्स से एन एन आई एम क्रिएटिंग, मैं यहाँ पे एक नया एच टी एम एल का फाइल बना रही हूँ, एंड आई वॉन्ट कि फाइल को क्रिएट भी कर दो और राइट मोड में खोल भी दो। ठीक है, फंक्शन को दिया डॉट राइट, अब फाइल को ओपन भी कर दो, इसे इसमें राइट भी कर दो। मैंने दिया
HTML का हेड आउटपुट दिखाना चाह रही थी, हेड देना चाह रही थी, वेलकम वर्ड लिखना चाह रही हूँ, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन करना चाह रही हूँ, MCS 201 जुलाई 9 में टैग इज ओपन, सो वी हैव टू बी क्लोज द टैग नाउ टू दी ए। मैं एक हेडिंग डालना चाह रही हूँ, ए हेडिंग ना डाल के इट्स जुलाई 9, इट्स फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग आई एम राइट हियर, यू स्टैंड फॉर इट्स अंडरलाइन कर दो, CS यानी कि कंप्यूटर साइंस को, पोर्टल फॉर एवरीवन। ठीक है, एक छोटा सा लाइन लिख दिया है और मैंने इसको एंड कर दिया है, सी दिस इज द एग्जैक्टली। और उसके बाद फंक्शन डॉट क्लोज बिकॉज वी आर ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग, अदरवाइज हम लूप में घूमते रहेंगे। जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन, राइट। अब जैसे मैं सेव कर रही हूँ इसको and I want to show the result. So as well as we run, like this prompt is blinking here. It means there is no exception in this code. If exception is not generated, definitely the output is in the running mode. That indicate us, right? I am just minimize all the thing, moving to the exact folder. See here, before n I am creating my n file. Now I am moving to this n. Just say right click and open into the browser mode. It is my HTML file, right? So welcome to MCS 201 July 9, and July 9 file handling CS we are giving over there. It's in U. U stand for underline, B stand for bold, I stand for italic, right? If we just write P, P stand for the paragraph tag. All the HTML tags are visible at this mode. Now, Anjali, your answer, your query is solved now. Thank you so much, ma'am. Got it. Thank you for your exam. Anjali, thank you very much. Now, anyone having any doubt in these concepts, please be unmute of yourself and share it. नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी, थोड़ा सा नया यूनिट आएगा, इट इज नोन एज लाइक क्लासेस, ओप्स, कॉन्सेप्ट एंड ऑल। ठीक है, तो मैं यहाँ तक थोड़ा सा जाऊंगी। अच्छा, मुझे अभी एक बार अटेंडेंस मार्क करना है, सो कैन ऑल ऑफ यू ओपन द मोबाइल योर कैमरा। जो भी एरर है प्लीज मेरे साथ शेयर कर दीजिए, और आज अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है। सचिन, आई कैन सी यू, अंजलि आई कैन सी यू, सच अ नाइस फेसेस, यू नो, स्माइली फेसेस। ये इतने टाइट टाइट से क्यों हो सब, ऑफिस में हो क्या? दीपक, आई जस्ट सी यू नाउ, हैव एनी डाउट? ऑल थिंग्स आर क्लियर? ओके, ऑलराइट। राजश्री, नाउ आई कैन सी यू। पिल्ली, चलो ओके, प्रशांत भी आ गए, ऑल राइट। सी गाइस, वी हैवंट एनी एरर, वी हैवंट एनी डाउट, कुछ नहीं है तो आगे बढ़े क्या? सच Yes, ma'am. बताओ, झूठ मत बोलना। ऑलराइट, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चल रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी एक क्लास में आपके थियरी वाले पूरे डाउट लूं, और एक छोटा छोटा क्वेश्चन पेपर टाइप ऑफ असेसमेंट भी हम करें। ठीक है, लेट स्टार्ट विद द ब्लॉक नंबर 4 की फर्स्ट यूनिट जो भी है। इफ यू वांट यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा नाउ। See, as usual, this is our fourth block, and according to our fourth block, these are the specific topic or unit which we covered. We are in a position to move ourselves or upgrade ourselves. So, basic, then core, and then advanced. So this is our level number 3, and after this we have to be upgrade ourselves into the
एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, तो हम वहां चलेंगे, लेकिन अभी हम आ गए हैं अपने एडवांस लेवल के प्रोसेस पे। And what is our advanced level? See, as per the screen, we see here some of the topics are mentioned, like what type of topics are available. So give me a minute actually. See, the core topics are given here. It's our unit number 13, classes in Python, exception handling in Python programming, the Python advanced concept and data access using Python. So the first topic is classes in Python. See, uh, see why we are just introduced here. It's a OOPS concept. In our procedural programming standard, we just go by the a particular approach that is top to bottom only. So the two blocks, like block number one and the block number two, is thoroughly uh, giving knowledge about the procedures, how to write the function, how many types of functions we have, what is user defined built in line, how many operators we are using, what are the loops concepts. So we compare our first two block with C versus Python, right? So procedure to procedure. Now we understand like what is the basic structure and what is the basic boundaries to write a procedure. Now we are moving to our last block, and they literally write a word that is advanced feature. It means C is upgraded into the C++, right? And here we upgrade ourselves in the concept of classes. So in the C++, we have the OOPS features, like what is the definition of class, what is like operator, what is the attention or importance of our object, what is polymorphism, operator overloading, overriding, the late binding or the early binding concept. One class can have one object, or one class can have more than one object. What is this? What are the functionality and what are the features known as an inheritance, like single level, multi-level, multiple. So yes, are a structure we read in C++. Now we compare a C++, we won't be able to, because whole things are based on that concept. That's why we are jumping into the high level language. So Python is one of the simple, versatile, robust, nuclear and secure language, right? So that's why our fourth block is introduced the concept of classes. So unit number 13, we covered up the concept of classes. So the first thing is, what is the definition of a class? It is a blueprint. We can say it's like a similar group of elements or member data or member method. So they give definition, and before going to the block, I just cover the whole concept, object oriented, the first thing, and the second thing is polymorphism. Okay, all right. So first of all, I'll just start now. I can maximize the screen. If you have any doubt, then please unmute at the same time, right? And then we'll solve it. See, this is the concept of advanced Python programming, and OOPS, we can say it's a OOPS programming or OOPS based programming. So first thing is we understand like what is class, how to define, what are the features of inheritance, and what is known as Python constructor, parameterized, non-parameterized, or default. So first we understand what is a class and what is the definition of a class. We know a class
These are or maybe are logical grouping of knowledge and function. So it gives the liberty to make data structure that contain arbitrary content and can be accessible very easily. So they say like in any of the bank employees are working, if who wants to fetch the customer detail, it's a online, they can attend the customer class. This is our example. So all the attribute would be listed here. Just maybe it's a transaction, withdrawal or deposit, or outstanding of the debt. So how to define a Python class? How to define class in Python? So first of all, we need a keyword. That keyword is known as class. So first, the thing we need a class keyword, and then later on the name of the class, curly open, curly closing में, it is known as an default class, right? Without argument, and this colon stand for the curly open, curly closing concept. Now the second thing is inside classes define functions and methods. Suppose that I am making a diagram of the class. Let's say this is the class container. This is known as a class container. And oh my god, uh, through that line I can make it now. See, we can easily divide our class in three particular parts. The first part is name of the class ka name. In the second one part, we just declare our variables. And here, at the last one or last level of our class, we just create our methods, right? So firstly, class name, second variable declaration, and then third method declaration. So class ka name is what? My class. Now, variables are what according to our suitability, we create our variable like integers, we have floating set, char say and all. And method is what using with the def keyword, we just give a method name, right? So that is the UML diagram. UML stand for the Unified Modeling Language, and online number of softwares are available. I can give you the name after this. Like first we understand and then we'll move. So method one is self, means class call itself first. Self is not a predefined word. We can create our own uh, argument here. Through this print, we can just print like course. Method two, we just write like self and some string. We are not putting any kind of code. It means some string is known as a is storing as a value. So software testing plus stand for concatenation. We want to concat some value which is stored in some string, right? So the next step, we are just asking to define the class like it's a convention with the help of parameter. Without the help of the parameter, we can just create and use that function. So function, loops, statements, we are just using these things with the like classic. Without our object, it is not possible to call the member data or member method. So first thing is we create our object, and object is able like my class को तो memory पहचान रहा है. My class is understood by our memory, but if we are not creating an object, then we are not in a position to call our member data member method. We just give a value like through the C is the object, we allocate the memory of this object, then in that memory can recognize our object, right? Up now C is capable to call the method, or C is capable, or any OBJ is capable to call the member data or member method. But without our object, we cannot call our class, member data, and member function. So here we create a class, here we create a method, and in this print, it means through this method we can define some value, right? So
This is like C is the object of this class. So method 1 and method 2 is calling. Now this is another type of things like if space underscore underscore name. So if we want to declare like initialization as well as documentation, doc typing is mentioning, then in that we can just able to call. See, inheritance we are not covering at this moment because one by one we have to be using the concept as per our. ठीक है क्लास जो है वेरिएबल है देन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स है डेफ कीवर्ड है क्लास का मेथड है डेफ कीवर्ड है क्लास का मेथड है क्लास रेक्टेंगल है डेफ करके आप डिफाइन कर रहे हो ठीक है एंड सेल्फ करके आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हो. So they say set side, area, parameter. Rectangle is definitely will just ask like a finding the area of that rectangle. तो L into B ही करोगे है ना तो एरिया आ जाएंगे तो वो जो भी वैल्यू डिक्लेयर होगी वो उसमें कॉल हो जाएगी. देन दे आस्क के रेक्टेंगल का ओबीजे डिक्लेयर हुआ ओबीजे स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट R1 R2 C1 C2 इस तरीके से आपके someone is finding out, you can easily find out if unit number one is there because I'm not able to see the page numbers. So, not able to ask you किस page पे जाके देख लो. But still, when you open your block number 4, you can easily get this example. So they say program to calculate area and parameter of a rectangle. So class is a keyword. All letters are small. Rectangle is the class name. Def define a function. Set site it's a self class or function is declared as well as we're calling. So function to set the height and the width. So set dot height one equal height three. The class is a normal class. A class is a default constructor class. That's why we just write side one का height और side two का height. ठीक है तो सेल्फ वन से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का और एक नॉर्मल क्लास का कंस्ट्रक्टर नॉर्मल क्लास का दोनों का जो ये उसका आर्ग्यूमेंट और उसका वेरिएबल इज इक्वल राइट जैसे if you are aware of कि some of you are aware of like this keyword we are using right सेम यहाँ पे सेल्फ डॉट साइड वन साइड टू हम यूज कर रहे हैं डेफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दे रहे हैं रिटर्न हो रहा है क्योंकि डेफ इज व्हाट इट्स अ रिटर्न टाइप इट्स बाय डिफॉल्ट हैविंग अ इंटीजर ना तो आप रिटर्न दे रहे हो सेल्फ का साइड वन मल्टीप्लाई बाय साइड टू पैरामीटर निकालना है तो टू सेल्फ साइड और सेल्फ मीन जो भी वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं वो उसके बेसिस पे आप उसका पैरामीटर गेट कर लोगे ओ ऑब्जेक्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग लाइक रेक्टेंगल क्लास कंस्ट्रक्टर इट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर now first value we are passing to our argument or parameters so 4 is for the height and 5 is for the length just like कि ये जो बन रहा है ना ये भी एक रेक्टेंगल ही है see this line segment is equal to this one and this line is equal to this one that is the rectangle process so we find out कि rectangle बल 4 into 5 कर देगा one class can have more than one object the advantage to declare a object is like one time we are able to get more than one result, right? So it means time complexity and space complexity we are mentioning here, we are controlling here. So this is like obj2. So rectangle का side 2, 2,6. Again, it's a set. तो जो भी मेथड भी राइट ना सेल्फ का साइड वन मल्टीप्लाई बाय सेल्फ का साइड टू तो सबसे पहले एरिया आ जाएगा पैरामीटर
पैरामीटर आ जाएगा, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2. सी, this curly open and curly closing is the showing the value. It is the dictionary. It is known as a default dictionary. अब DICT करते हो, डिफॉल्ट डिक्शनरी डिक्लेयर करते हो ना, तो डिफॉल्ट डिक्शनरी है, ठीक है. एम्पटी डिक्शनरी स्पेस ऑक्यूपाई है. डॉट फॉर्मेट एक्सेस स्पेसिफायर दे रहे हो, कैसी वैल्यू जाएगी, इंटीजर जाएगी, ठीक है. अभी इसका रिजल्ट देखिए. सो 4 and 5, 2 and 6. So area of the rectangle 1 is, you are passing this now. So they says I am first, and the second shows I am 2. So on the basis of the result, we are getting a specific value. So this is the whole concept of your rectangle class. The second thing is class rectangle def करके define कर रहे हो. So init method is calling automatically. At the time of declaration ही compiler उसको calling procedure दे देता है. So this method is invoked without call. So automatically get invoked as soon as you create your object. The class is get invoked automatically, right? When two objects, object 1 and object 2 are created, so we just give an init method and column. See, class and methods are given. It's a predefined word. Class is used to describe, and method is what? It's a predefined word. So def is used to describe. In the class, we can say each class statement define a new type with a given name. And method के लिए a def statement define a new function with a given name. Now, what is this class? So each class name is proceed by and column, and method is what? Each method name is proceed by a column. तो क्लास रेक्टेंगल और इधर जो मेथड का नाम है वो डिफाइन हो गया है लेफ्ट सेट साइड. नाउ द सेकंड थिंग इज inherit. Before going to be start the inherit, we just have a look to create. Let's say this is our online source. I can just give you the link in the chat box. See, I am copied it out and shared with you all. Oh my god, it yeah. See, this is our online software. The software name is Draw.io only. When you write this Draw.io, a new window container in front of you. My screen is shared with you all. So I'm just keeping this whole thing into a new window so that you all are easily view like what type of functionality we're performing. After write this link, the screen is open for us. It's a open source. Behalf of this one, we can easily create a diagram. Now, I am creating a diagram which shows here the class diagram or the inheritance process. So, this is a new diagram. So, this is blend diagram, a class diagram, and flow diagram. The number of diagrams are aware of. What is the need of this software? The need is this, like we have to be create some data analysis part. So as for that part, we just create some process. I'm creating a blank diagram. I'm giving a name that is 201 onto my desktop. And then later on, it gives me a screen. Right? I'm finding like what type of thing I need here. I just directly go to the UML and say the number of figures and diagrams are showing here. This is the core approach of the class diagram. If you want, you can stretch it out.
ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके लेट्स से माय क्लास नेम इज student, right? The field means the attribute type. So first of all, I'll declare student having the enrollment number, and the second attribute I am creating here, that is the stu underscore name, right? That is the variable declare. They just write a method. According to my concept, I am creating a method. तो जैसा भी मेथड लेना हो वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं. The second thing is they are just giving a diagram. It's a interface, it's an object, component. I want to create a class diagram only. So this is my class one. So this is our class and this is the class two. So this is the example which is known as a, like it's a inheritance where we have a base class, and base class is totally uh, coordinate with the class P. It's a parent and child. So I'm just keeping the entire thing. कि parent जो है वो ये बने और जो मेरा child class है वो ये बने. ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन है वो हो जाता है इनहेरिटेंस. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन वर्क वेल. द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल. So any of you have any problem or any discussion, please be unmute. Otherwise, I'll just continue with the same topic. जो भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कुछ भी जो भी क्वेश्चन है अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए. Our students are keeping mom, it shows like there is no any doubt. So I just continue my topic. मैं आपको यही सेम टॉपिक करा देती हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कोई डाउट है. देखिए, in our blog we just introduce our topic. The topic is inheritance. Inheritance means it shows like one class is totally derived by their own childs. So independently we can work with one class, but still if we are talking about the relationship, right? Being a parent or a child, then here we having the majority of 3 to 5 types of inheritance: single level, multi-level, multiple, hierarchical, and networking. See, so inheritance could be giving a reflection or a result of like parent and child. So inheritance is what? It is a mechanism
by which or through this mechanism we can acquire the object or the object acquire the property of the another object. And we can say it is the methodology like we are generating the hierarchy. The child class is totally derived all the properties or the methods to the parent, right? So this is known as a combination of base class, parent class, superclass. And whoso depend on them, they are known as child class, subclass, dependent class, or derived class. So parent is independent class and child is fully dependent on their parent. So child class which is inherited is called as a base class, parent class or super, and inheriting class is called as a derived class होगी, child class होगी, subclass होगी. So the term we know here and the term we use here that is parent to child. Now what is the motto behind this? Like why we are asking two things simultaneously we can develop. We want to use, we want to work with a particular word that is reusability. It means we keep going on saving our time, saving our work complexity and space complexity. It means we create our code at one time, and if the need occur, we can access by we can accessed by our child. So we just want to save our time. That is the main motto behind the inheritance. So inheritance is code reusability concept. Now, this time we are talking about the syntax of inheritance. What is inheritance? As per the name, we easily understand it is the concept of base class, parent class, superclass, or main class. And whosoever depend on our parent, that is known as child class, subclass, or dependent class. So first thing is we are aware of the name of the class means child class, or child class can have a dependent class. So the second name is mentioning here, it's a parent one. So next line we just write like consider a class that is parent, parent containing method 1 and method 2. It's okay. And a child class with method B1 and B2. Now, we are creating an object. If we create the object of our parent, then child class object will not be, called. So it is more easy or easier to us. We create the object of our child class, right? On the basis of child class, we can easily call the parent method or derive the parent method. So approach is top to bottom. This example 3 is giving us the full, meaningful result. We create a class that is known as a parent. We create a method that is step method A1, and under this method A1, it is the default method. We are not passing any kind of argument, right? And now the second thing is we create a method that is method 2, and immediately we can create a class. And then we define some method, and obj1 we are creating, just write obj1 का parent and obj1 का method A and method 2. So only we are in a position to call our parent method only. But still, the question is, ma'am, could you share your screen? Okay, all right. I can share my screen fast. Wait. It's a request. Please open the blog fast. Okay.
See, so I am just asking the example 3, which is shown in our block number 4, the first unit. So the class parent is there, method 1 and method 2 is showing a particular message, that is method 1 of parent 1, method 2 of the parent class. Now another class is there. The another class is what? Class child ka parent. So method 1 and method 2 is created. OBJ equal parent. OBJ equal parent means we have to be create a object, and through that object we can easily access our data which is stored in our method. OBJ1 is capable uh, to call the method 1 and method 2. So method 1 like this, these two methods are print on that. Yes, yes, Anjali, it's a block number 4, but I am not showing like which page. Page number 12 is there. Okay, guys, please open some page number 12. The question number is given at the page number 12. So method 1 and method 2 is given, and we are in a position to get this result. But the thing is, I want to call the method B1 and method B2 as well. But on the basis of this object, we are able to call parent 1 methods only because we are not creating or created the method as in B. So now we can just change one situation, one line. Here we are creating a object of parent one. That's why we are in a position to call our method one. Class parent one means base class ka method. We just giving a proper changing here. Obj2 it means child. Now child is what? Child is more capable because parent is totally depend on child, no? So child class can extend the member data, extend the member method of the parent. ये अप्रोच इतनी ही आसान हो गई कि आपने member data member method से उसको कॉल कर दिया. तो अब जो ऑब्जेक्ट बन गया वो किसका बन गया? चाइल्ड का बन गया. लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूंगी. लेट्स से इट्स अ क्लास. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिख रही हूँ आपको अप्रोच को समझाने के लिए. से इट्स अ क्लास ए. लेट्स से तो क्लास ए हैविंग वन डेटा, इट्स अ void शो. छोटा सा बना देती हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. प्रिंट टैग से भी करवा सकते हो, प्रिंट से करवा सकते हो, सी आउट से करा सकते हो. So I'm asking, it's a simple message, right? It's a parent one. एक मैसेज लिखा एंड देन वी आर मूविंग. अब हमें कहाँ चलना है? उसके चाइल्ड प्रोसेस पे जाना है. व्हाट इज द चाइल्ड प्रोसेस? Child process is, here we do one thing. This is the opening of our class and this one is the closing of the parent class. It is known as a respective one. So I am creating another class, that is class B है. वो क्या करेगी? Extend कर जाएगी किसको? Class A को. Simple, right? And the second thing is, see, I am just showing you the value, like कैसे ये होगा. बाकी बुक में तो बहुत इजीली गिवन है. अप्रोच को समझने के लिए आई एम मेकिंग दिस लेंदी process program, so all of you are easily understand like what type of thing we are maintaining. I just write here कि ये method B के पास भी है. मेथड का नाम थोड़ा चेंज कर रही हूँ. उनका शो था, इसने शो 1 बना लिया और यहाँ पे हेलो ऑल चाइल्ड 1 मैसेज दिया. अब मैसेज देखिए, सिंपल सेज लाइक क्लास का मेथड यहीं पे क्लोज कर दिया, मेन आ गया. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है. इफ आई एम आस्किंग कि ए या ओबीजे बनाना है मुझे, तो मुझे देना होगा क्लास का नाम ओबीजे
डिक्लेयर करनी होगी मेमोरी, सी द कॉन्सेप्ट इज वेरी लेंदी। तो ओबीजे इज कैपेबल टू शो द रिजल्ट ऑफ दिस वन ओनली, वो सिर्फ यही शो कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर छोटा सा कंस्ट्रक्टर चेंज कर दें, तो जस्ट क्रिएट के बी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बी को यहाँ कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल कर लेते हैं। नाउ बी हैविंग अ ऑब्जेक्ट, so B class is what? It is the dependent class. It is the child class of the parent one. So B object means B का obj is capable to call whatever the value is storing here, easily access हो जाएगा। and B का अपना भी method, अगर एक सिंगल मेथड होता और वो पेरेंट का होता तो हमारा काम ऐसे हो जाता था। बट अभी क्योंकि हमें डिफाइन करना है वैल्यू, तो हमने क्या करा, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी का ही वैल्यू डिफाइन करा और बी के थ्रू ही उसको कॉल करा लिया, क्योंकि अभी दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उन्हें हमें कॉल करना। क्लियर? नाउ गाइस, दिस कंसेप्ट इज लिटिल बिट टफ। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज मुझे बताइए। इफ यू हैव अ क्वेरी, प्लीज बी ओपन, प्लीज बी शेयर। Anyone having any question, guys? यदि ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज। ओके, अंजलि सेज नो क्वेरी मैम। ओके, ऑल राइट अंजलि। सी एग्जाम आने वाले हैं, आर यू गेट योर डेट शीट? डेट यू नो इट, लाइक व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ योर एग्जाम? कब से स्टार्ट पता है क्या? नो क्वेश्चन। आज सबने बात ना करने का वो सोचा हुआ है क्या? निका मैम से नाराज है सभी क्या? बात नहीं करोगे, बताओगे नहीं कुछ? नाराज हो? हम्म? नाराज हो तो नाराजगी बनती है भाई, डिस्कशन करेंगे, नाराजगी दूर भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ बताओ तो। Now we did not get the exam form. Oh me he, that is available on our website. एक बार जाके देखो, क्योंकि कई बार चीजें अपलोड होती हैं तो हो जाता है, तो उसको कीप गोइंग ऑन। एक एक दो दो दिन में आप देखो, फॉर्म जरूर वहीं पे ही है, अवेलेबल है। इट इज नॉट फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट। Oh, eBay project, eBay. I'm not aware of your name. It's an eBay project. Can you share your name? बता पाओगे नाम? ये कुछ नाम आपने ऐसा रखा हुआ है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे आपको प्रोनाउंस करूँ, कैसे आपसे बात करूँ? अब मेरे को यही नाम लेना पड़ेगा। ऑनलाइन ही है आपका सब कुछ तो, है ना? चलो, मुझे बताओ, क्या कोई डाउट है ऐसा? अंजलि, Radhan, Ebe, Rajeshri, Sachin Kumar, yes, all it's online, but नहीं पता क्या क्या लिखा है, but नहीं पता है, नहीं कि हमारा एग्जाम फॉर्म का है। इट्स नॉट फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट और मैसेज, वो मैसेज तो पढ़ लिया, लेकिन मुझे वो मैसेज से ज्यादा आपका नाम पूछना था। आई वॉन्ट टू नो योर गुड नेम, तभी मैं ऐसा बोल रही थी, बट मुझे आप नाम नहीं बता रहे हो तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगी ना। मनीषा, अखिल, आर्यन, अंजलि। नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा ना, सरनेम प्रोजेक्ट नेम इज
ओके, ऑलराइट, चलो, जब पता चल गया मुझे, दिस इज, आई नो योर नेम, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, द मेजर क्वेश्चन इज, डू वी हैव एनी डाउट, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक रिजल्ट आएगा, और वो एक अच्छा रिजल्ट तभी होगा जब आप अपने काउंसलिंग सेशन को एक क्वेश्चन आंसरिंग मेथड पे रखोगे, शेयरिंग प्रोसेस पे रखोगे, डिस्कशन पॉइंट पे रखोगे, है ना। तो रॉन्ग आईडी से ज्वाइन कर लिया, कोई इशू नहीं। अब आईडी आपने जो भी ज्वाइन की हो तो थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। काउंसलर्स कैसे बात करें आपसे, नाम कैसे लें, पूछे कैसे, क्वेरी कैसे हैंडल करें। No, it's not the matter of sorry, don't say. But you know, name is for our reflection, for our presentation, for our personality enhancement. नाम से तो पता चलता है कि हम क्या हैं, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है अपनी पहचान के लिए, अपने वजूद के लिए। अपने नाम को आप खुद से प्रोनाउंस करके आगे बढ़ेंगे, तभी तो आगे स्टेप आउट होते हैं। चलो एनी हाउ, मुझे ये बताओ कि अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई भी ऐसा कंसर्न या क्वेरी है, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप पूछिए। बुक में एक एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, चार एग्जाम्पल है, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वी टेक अ रियल वर्ड एग्जाम्पल एज वेल। सो कुड यू प्लीज आस्क मी द क्वेरी, मुझे क्वेरी पता चले उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँ। अगर नहीं है, then you just write, ma'am, everything is clear, no doubt. Ma'am, Anjali says yes, yes. For now, from my side, Anjali, I read your message. पढ़ाने का तो ठीक है मैम, बट मेनली अभी सर सब एग्जाम के रिगार्डिंग कंफ्यूज थे। बेटा एक छोटी सी बात बोलूंगी लाइफ में, हम लोग स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो पहली बात, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। एक ऑनलाइन या ऑफलाइन जब आप एक एजुकेशन का पार्ट बन रहे हो, इट्स अ मास्टर डिग्री, वो चाहे ऑनलाइन की हो, ऑफलाइन की हो, हाइब्रिड मोड की हो। हमने जब डिसीजन लिया है तो वो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा है, और हम कंफ्यूज है ही नहीं, क्योंकि हम नोटिफिकेशन के साथ चल रहे हैं। ठीक है। तो कंफ्यूजन वाला वर्ड लाइफ में और डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन का वर्ड सिर्फ कोडिंग जब हम लिखते हैं ना, उसमें होना चाहिए, और उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन फाइंडिंग होना चाहिए। अब हमें थोड़ी सी मेथोडोलॉजी चेंज करनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूज मत रहो, जो भी कंफ्यूजन है वो आप शेयर कर दो यहाँ पर। अब बहुत सारी टीम है जो आपके साथ है, और बहुत सारी टीम आपके साथ है, सबके साथ है। इट्स मीन मैंने गलत डिक्शनरी बाय कर चेंजेस, changes, changes always reflect. Change what is good for our world, for our society, for ourselves. चलो बताओ, पहले सबसे पहले बताओ, टॉपिक पे आ रही हूँ। डू वी हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई भी लाइन अगर समझ नहीं आया है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज बताओ, नहीं तो फिर आगे चलेंगे हम। नहीं है तो मैं मूव करूंगी, नॉट फ्रॉम माई साइड। ओके, ऑल राइट, दो बच्चों का आंसर आया है। आई हैव 15 मोर, यू नो टोटल स्ट्रेंथ में दो का रिस्पॉन्स, अभी 15 का बाकी है। वन बाय वन प्लीज आस्क मी, डू वी हैव अ डाउट, और डू वी डोंट हैव अ डाउट, शैल वी प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक, एंड वी और वी स्टक अप टू डिस्कस द सेम वन, प्लीज मुझे बताओ। देखो, मुझे डिस्कस नहीं भी करोगे तो
मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है काउंसलिंग सेशन का। मैं उसमें वो सारी चीज़ें कवर तो करा दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है, और अभी आप काउंसलिंग सेशन में थोड़ा सा लेक्चर प्लान को रीड कर लें अगर थोड़ा सा, तो बहुत अच्छे सेशन मिले आपको। और अगर आप डिस्कस कर दोगे तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। राजश्री सेज नो डाउट। ओके, ऑल राइट, डन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और कुछ पहले समझ लेते हैं, और उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पे आगे जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं एक पेंट ले रही हूँ। दिस पेंट हैविंग, मैं छोटा छोटा यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली आई एम मेकिंग इनहेरिटेंस प्रोसेस। मैं शायद वो बनाकर समझाने की कोशिश करूंगी। The line connectors, they are not the line connector, they are known as a strong relationship। ठीक है, वो कुछ strong relationship है जो कि हमारी क्लास के रिलेशन को समझ देगी। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम मैं शो कर रही हूँ। थोड़ा ड्राइंग का हिसाब किताब थोड़ा सा सही नहीं है, समझ जाना। देखो, कोशिश की है मैंने बनाने की। द फर्स्ट एग्जाम्पल we just see here, the first example is known as a single level inheritance. What is the single level inheritance? It is a base class. That's my base class mainly says. And B is what? It is known as a child class. So B class is fully dependent on my child class. So A class can have their own member data, यानी कि उनका अपना वेरिएबल होगा, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, फीचर्स होंगे। अब ये जो है ना मेंबर मेथड है, जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं, वी आर द पेरेंट, राइट? तो हमारे डेटा क्या है? लाइक नाम, डेजिग्नेशन, एज, रिसर्च सब्जेक्ट, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंसेस, ये आपके फीचर्स हैं। अब मेथड क्या है? टाइमली हमारा जो बिहेव है वो चेंज हो रहा है, राइट? तो जैसे जैसा हमारा समय होगा वैसे वैसे हमारा बिहेव चेंज हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी क्लास किसने एक्सटेंड करी? बी ने। तो बी इज द चाइल्ड। बी को इनके मेथड को, इनके प्रॉपर्टी को डिराइव करने से कोई नहीं रोक सकता है। So B can easily extend their whole data to their respective parent, and B can have their own member data and member method. So which one is more capable? Like B is more capable. We are creating the object of the B, right? So B is able to fetch all the record which is shown here, and B is already, very stronger, which can easily access this data, and it is known as a single level inheritance, one to one. The kind of relation we are fulfilling, one parent can have one child only. Now, the second example we are making here, that is what? This is like class A is the class B, and this is the class C, right? So class A से class B और class B से class C. So A का member data और member method, B का member data और member method, C का member data और member method बहुत अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ना अप्रोच थोड़ी चेंज हो गई। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अवर फैमिली, अपने फैमिली को, क्योंकि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट भी रियल वर्ड से आना है, ठीक है? हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपना एग्जाम्पल लेंगे। सो A is depend on the B1, B is depend on the C1, right? So I'm making a graph. A की
जितने भी मेंबर डेटा और मेंबर मेथड किन्होंने एक्सटेंड करा, बी ने। और बी जो कि इंटरमीडिएट क्लास है, उनका डेटा मेंबर मेथड किसने एक्सटेंड करा, सी ने। तो जो बी है वो एक स्पेसिफिक इंटरमीडिएट प्रोसेस हो गई बिटवीन ए टू सी। तो अगर हम ऐसा बोल दें कि ए डायरेक्टली ट्रांजिट देयर डेटा टू सी, इट इज ओके, बिल्कुल सही है। सो ए इज नोन एज द ग्रैंड पेरेंट, B is known as our parent. And who is this class? This is known as a child class. तो अगर चाइल्ड की बात पेरेंट नहीं मान रहे हैं ना, चाइल्ड के पास प्रिविलेज है, वो वही बात अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मनवा लेते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं नहीं अभी नहीं जाना, अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी बाहर ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी रुक जाओ। चाइल्ड को मिल रहा अपॉर्चुनिटी वर्क विद इन ऑस्ट्रेलिया, मूविंग टू यूके एंड कनाडा। चाइल्ड कहता है बिल्कुल नहीं रुकूंगा, जाना ही आना तो है फ्लाइट से, कंपनी कैन गिव मी द टाइम। चाइल्ड डायरेक्टली अप्रोच ले लेता है ग्रैंड पेरेंट्स की, बोलता है बस मम्मा पापा को अभी मत बताना, वहां जाके मैं खुद कॉल कर दूंगा। समझ लो। तो चाइल्ड के पास यानी कि सी के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है और हमारे लिए डेटा को रीयूज करना बहुत ज्यादा अच्छा है, बट वन टू वन। so this is known as multi L level inheritance। नाउ अब यहाँ आ रही, यहाँ पे देखो अप्रोच जा रही है, हम टॉप से बॉटम आ सकते हैं, हम बॉटम से टॉप जा सकते हैं, माने हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, हम स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। इवन तो अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन कंपेयर इट, हम कंपेयर भी कर सकते हैं हर चीज को। ठीक है। तो अब इसमें एक पेरेंट के एक से ज्यादा चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऊप्स की फंक्शनैलिटी है वो टाइमली चेंज हो रही है समय के साथ। So that's why OOPS concept is known as the advanced concept of the program. Got it? Where we can discuss like single level, where we can discuss like multi-level, where we can discuss like multiple. Now other programming we are just discussing like hierarchical भी होता है, networking भी होता है, but high level language ने ना उन दोनों को concise कर दिया, bound कर दिया। तो अभी तीन तरीके की इनहेरिटेंस मस्ट बी कंसिडर बाय आर इंडस्ट्री। बहुत फैमिलियर होकर काम करते हो आप, सिंगल लेवल पे, मल्टी लेवल पे और मल्टीपल। मल्टीपल में ही बाकी सारे जो फंक्शन मैकेनिज्म है वो आपका बाउंडिंग हो गया। लेट्स से ओवरलोडिंग कब होगा, ओवरराइटिंग कब होगा, पॉलीमॉर्फिज्म की कंसेप्ट आ गई, रीयूजेबिलिटी इज at what time like reusability is able to consider that record. Okay, so these are the fully approach. This is the complete scenario of your inheritance process, and later on, like we just cover all this topic whenever our class is going on. So my question is, my only request is प्लीज शेयर योर डाउट, क्योंकि ना अब लेंदीनेस बढ़ेगी। Any doubt is, in our mind, then definitely the next steps we are not going to be covered, because each and everything is totally depend on each। तो अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप डिस्कस करना चाहते हो इनहेरिटेंस को लेकर तो पूछिए, ताकि जो इसकी नेक्स्ट क्लास है उसमें भी थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी। यस प्लीज बी अनम्यूट ऑफ योरसेल्फ, आई वांट टू लिसन द थिंग। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो मैं आपका डिस्कस करने के बाद उसको यस प्लीज waiting, I'm still waiting. Be unmute, be share। ये तो मैं बार बार पूछ रही हूँ, रिजल्ट का पता है ना, 88 से कम मत लाना प्लीज। और मुझे पता है सारे बहुत इंटेलिजेंट हो, सब हो, ईच वन ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई मीन ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, थिंकिंग पावर अच्छी है, सोच अच्छी है, एमसीए के मास्टर कोर्स में एनरोल है आप सब, तो 80 प्लस तो बनता है। 80 से बिलो मार्क्स तो ठीक है, एवरेज होंगे। वो लाने के लिए वो मोटो रख के अगर हम काम करें तो फिर चीज़ें ठीक होंगी, कस्टमाइज हो जाएगी। यस
Still waiting. Still waiting. Yes, do you have any doubt? Then share your doubt. If you don't have any doubt, you can it how can we practice for that? मुझे tattoo नहीं see. The only thing is we have our software with us, and after this bridge course, our classes are going on, right? So I'll just give you a plan for that. In my all the classes, I'm just giving you the examples as well. So that is the first thing. You keep consider that example by heart. And the second thing is, give me a second. Who is coming? Who is entering in the class? Okay, the second thing is, I just open it like help me Jaake doc. See, the Python tutorials are available. So up to the input and output we cover it, right? This is the concept of class C block. The concept is inheritance. Moreover, each one of the repository having the syntax, having the description, as well as description के साथ the example, right? So nowadays it is too easy to learn the right. We are independently read the whole concept. We are independently sort out each one of the things. That is the one way. And the second thing is in our blog, lot of YouTube links are also given here. The site is Swayam, right? And the second thing, the course material. The third thing, if we attend our sessions regularly, so it is very easy to understand or practice, right? So you can easily read the theoretical aspect as well as you just perform your practical on the basis of your regularity. Or after that, if you have any doubt, then you please ask me. I can share you my drive link. You just keep your data over there, or you can just ask me, Nita at the tcpltd.com, right? You can write me a mail. You just get my number because this is my subject. You can just take my contact number and just give me a WhatsApp message according to any convenient time, like if you are free and I am available, I'll just ask you the thing, or the second thing is can solve that query and revert to me. So पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बताने के लिए कोई भी कमी नहीं है ये बस एक तो क्लास में थोड़ा सा टेंशन जरूरी है और ठीक है मैम आई कैन अच्छा क्या लिखा है what are the types of constructor one you mentioned earlier was in it? See, this is the default constructor. There is no any need to be called that default one. वो automatically call हो जाएगा. तो default होगा parameterized होगा. So default constructor, parameterized constructor और normal class constructor. ठीक है नहीं और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको शेयर करूंगी राइट कोई थैंक्स की जरूरत नहीं है सी दिस इज योर राइट अधिकार है आपका so can I wind up the session if we don't have the doubt guys can we Yes, ma'am. ओके थैंक यू वेरी मच हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं ठीक है कोई अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी बताओ
love your classes, ma'am. Anjali, thank you very much. God bless you. I love you all. As a kid, I love you all. My blessings are for you. Thank you. So now I'm leaving the session.